student. Today we are discussing the remaining part of the gymnosperm. That is a life cycle and the alternation of generation in gymnosperm. Student, यहाँ पे लाइफ साइकिल पैटर्न एंड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Alternation of generation is the any life cycle of organism. It consists of a two types of the generation. One generation alternate with the other generation in their life cycle regularly are called as the alternation of generation. यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द कौन से ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल दो टाइप के जनरेशन के अंदर कंप्लीट होती, वो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन. और यहाँ पे वन जनरेशन अल्टरनेट्स विद द अदर जनरेशन रेगुलरली, उसको क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन is the main prominent well organized well developed. It is a dominant and differentiated into root stem and the leaves. And in a cycas plant it is a male cycas plant is separate and female cycas plant is separate. That is called as the dioecious or a unisexual. Then at a maturity, male cycas plant produces the male cone. क्या बनता है? Male cone. नहीं, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ये male cone है ना. Then male cone is made up of a compactly arranged a microsporophyll. Okay, this is a microsporophyll. Then all the structures are diploid, means the double set of chromosome. Okay, अब ये देखो सब diploid है ना. माइक्रोस्पोरोफिल, ये सिंगल क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल. and they are compactly arranged or a cone like structure, hence it is called as the cone. Then these microsporophyll consist of a many microsporingia. उसके अंदर क्या है? Microsporingia. Then each microsporingia consists of a microspore mother cell. यहाँ पे देखो, a microspore mother cell are present within the microsporingium, then they are diploid and divide by meiosis. That is the RD. RD means the reductional division, जहां पे क्रोमोसोम नंबर is reduced to half, called the meiosis. और डॉटर सेल्स कितने बनते? 4 डॉटर सेल. meiosis के अंदर क्रोमोसोम नंबर is reduced to half and formation of the 4 microspore. If the ऐसा नीट के अंदर ही क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल ए फॉर्मेशन ऑफ द 100 माइक्रोस्पोर. कितने माइक्रोस्पोर बनते? 100. Then find out a total number of the microspore mother cell. अगर 100 माइक्रोस्पोर बनते तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर क्या होगा? 25. कितने? 25. ओके, यहां पे कैसा है? 1 को 4 तो 100 को कितने? तो 100 को 25. और मियोटिक सेल डिवीजन मियोसिस कितने टाइम होगा? इट इज ऑल्सो 25. कितने? 25 times meiosis takes place for the formation of a 100 microspores. Okay, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.
microsporogenesis. Okay, means the formation of the microspore from the microspore mother cell during the meiotic cell division are called as the a microsporogenesis. और यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनने के बाद एंड ऑफ द स्पोरोफाइट। यहाँ पे देखो ये माइक्रोस्पोर फॉर्म हो गए तो एंड ऑफ स्पोरोफाइट। मीन द स्पोरोफाइट का मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर। स्पोर बनने के बाद ये स्पोरोफाइट खत्म होता और दूसरा जनरेशन कौन सा बनता? गैमेटोफाइट। कौन सा? गैमेटोफाइट। मीन्स these are microspore are germinate। यहां पे क्या होता है? germination at a favorable condition। these are microspores are germinate at a favorable condition to form a new generation, new plant body, that is the male gametophyte। okay, ये माइक्रोस्पोर मेल है तो these are male spore or a microspore, or it is also known as the pollen grain। these are microspores are germinate at a favorable condition। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन है तो क्या है? उसका क्या बनता? मेल गैमेटोफाइट। एंड मेल गैमेटोफाइट इज रिड्यूसर, मींस द माइक्रोस्कोपिक, and it produces the a male gamete। means the in a gymnosperm male gametes or sperms are motile। they are motile, means that it can be moved from one place to another, hence it is called as the motile। okay, means the male gametophyte produces the male gametes and these male gametes or the sperm are ready for the process of fertilization। this is the a life cycle of the male cycas plant। then life cycle of the female cycas plant, sporophytic generation produces the female cycas plant and this female cycas plant produces the a female cone and female cone consists of a क्या है? ए मेगास्पोरोफिल। क्या है उसके अंदर? मेगास्पोरोफिल। ओके, ये देखो ऐसा ए मेगास्पोरोफिल है ना। तो मेगास्पोरोफिल हियर फिल विद द लीव्स, दैट लीव्स विच प्रोड्यूसेस द मेगास्पोर कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। एंड मेगास्पोरोफिल के अंदर ए मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम के अंदर a megaspore mother cell and megaspore mother cell is female। it is a female structure। okay, and these megaspore mother cell are divided by again meiosis, means the reductional division। if the chromosome number of the a megaspore mother cell is 10, then find out the chromosome number of the megaspore 5। okay, means this is the a chromosome number is reduced to half and formation of the a megaspore, end of the sporophytic female plant, formation of the megaspore। then these megaspore are germinate at a favorable condition to form female gametophyte। then this female gametophyte produces the female gamete or an egg which is haploid, means all the gametophytic stage are haploid and these female gamete or egg are ready for the process of fertilization। यहाँ पे देखो एक ब्लैक कलर जो है तो स्पोरोफाइटिक बताया गया और रेड कलर गैमेटोफाइट। ओके, जितने भी गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो क्या है? हैप्लॉइड है। और जितने भी स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो डिप्लॉइड है। यहां पे देखो बच्चों, ए स्पर्म एग, then process of fertilization। fertilization is the a fusion of male and female gamete
यहाँ पे n, यहाँ पे n plus n is equal to 2n. Means during the process of fertilization, male gamete fuses with the female gamete to form a diploid cell, and that diploid cell are called as the zygote. Okay, then the zygote are divide and redivide to form embryo. Means in a gymnosperm there is a dicot embryo. Dicot embryo means a embryo consists of a two cotyledon. Seed consists of a two cotyledon are called as the dicot, and embryo develops seed. Okay, embryo develops seed, and the seeds are germinate at a favorable condition to form again sporophytic generation. It may be male cycles plant or it may be female cycles plant. Again male plant, then male cone, microsporophyte, megasporangium, then microspore mother cell, then process of meiosis again develops microspore, then male gametophyte, sperm fertilization, then sporophytic generation, female plant, female cone, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल, then megasporangium, megaspore mother cell, then divide by meiosis to form megaspore, germinate to form female gametophyte, and again female gametophyte produces the egg, then process of fertilization, zygote formation, embryo, then seed. This is the a life cycle. लाइफ साइकिल जैसे डे नाइट, डे नाइट, डे खत्म हो गया नाइट चालू होती, नाइट खत्म हो गया डे. तो वैसे ही ए स्पोरोफाइटिक जनरेशन and gametophytic generation are alternate with each other, and both the generation are morphologically different, morphologically differ. Hence, the type of alternation of generation is a heteromorphic. क्या? Heteromorphic alternation of generation means the morphologically two types of the generation. Sporophyte is differ from gametophyte and gametophyte is differ from sporophyte. Hence the type of alternation of generation is a heteromorphic alternation of generation. Okay, means the sporophytic generation के अंदर रूट है, स्टेम है, लीव्स है. वैसे स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट के अंदर नहीं. गैमेटोफाइट इज ए माइक्रोस्कोपिक. ओके, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक एंड स्पोरोफाइट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड differentiation of the root, stem and the leaves. Hence the both the generation are morphologically different. Hence they are called as the heteromorphic alternation of generation. Okay, thanks.